हेलो एंड वेलकम टू एग्रीकल्चर ऑल सॉल्यूशन। दिस इज निखिल कुमार। आज का जो टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें हम जानेंगे डिफिनीशन, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोनेंट एंड अप्लीकेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग का। In the arid and semi-arid regions, precipitation is generally lower than potential evaporation, non-uniform in distribution, resulting in frequent drought periods during the crop growing season, and usually comes in intense bursts, resulting in surface runoff and uncontrolled reel and gully erosion. इसका डिफिनेशन जो है, the process of collecting natural precipitation from prepared watersheds for beneficial use। इन इजी वे, सरल भाषा में हम इसको कैसे कहेंगे, इसका परिभाषा। वाटर हार्वेस्टिंग इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ रन ऑफ फॉर इट्स प्रोडक्टिव यूज। Importance of water harvesting. Rainwater harvesting is one of the most effective methods of water harvesting management and water conservation. It is the term used to indicate the collection and storage of rainwater used for human, animals, and plant needs. Soil evaporation, indicate E in bracket, generally accounts for 30 to 50% of rainfall, a value that can exceed 50% in sparsely cropped farming system in semi-arid regions. Surface runoff is often reported to account for 10 to 25% of rainfall. Large and intensive rainfall events falling on soils with low water holding capacities result in significant deep percolation. Indicate D in bracket, accounting to some 10 to 30% of a rainfall. The results is that productive green water flow as transpiration, indicate T in bracket, in general is reported to account for merely 15 to 30% of rainfall. Rainfall partitioning in farming system in semi arid regions। तो यहाँ पे जो ये फिगर दिया गया है, इसमें क्या है कि जो हमारा वर्षा होती है, रेन, यहाँ पे 100% हो रही वर्षा, और यहाँ से 10 to 30% डीप पर्कुलेशन हो जा रहा है यहाँ पे सॉइल में, और यहाँ से 10 to 25% रन ऑफ हो जा रहा है, और इवेपोरेशन जो है 30 to 50% हो जा रहा है, और ये प्लांट्स के माध्यम से ट्रांसपायरेशन जो होता है 15 to 30%। ये फिगर में यही बताया गया है। Component and applicability of the system. Catchment area या रन ऑफ एरिया।
part of the land where a portion or all of the precipitation which falls on it flows and is runoff. It varies from a new square meters in bracket microcasement to as large as several square kilometers in bracket macrocasments. It can be agricultural, rocky or marginal land or even a rooftop or a paved road. Storage facilities. Place where the runoff water is held from the time it occurs until it is utilizably crops, animals, humans beings and or other uses. Target or use in bracket cultivated area. Beneficiary of the stored water in crop production. The target is the plant or the animals, whereas is domestic use. It refers to humans being and their needs. Principle of water harvesting for crop प्रोडक्शन। ये जो डायग्राम है फिगर, इसमें कैचमेंट है, एरिया है, एक स्टोरेज फैसिलिटीज है और यहाँ कल्टीवेटेड एरिया है। तो यहाँ से वाटर को कैच किया जाता है, उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी में आता है, उसके बाद फिर वहाँ से कल्टीवेटेड सिंचाई के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो रन ऑफ स्केल है, फील्ड में जो है सीड फ्लो, सब कैचमेंट में रील फ्लो और कैचमेंट में गली या रिवर फ्लो, गली रिवर फ्लो दो है। और स्टोरेज मीडियम जो है, सरफेस में डैम है, पॉन्ड्स है, तालाब, और सब सरफेस में टैंक्स है। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स may be grouped into two categories. इसमें फर्स्ट जो है माइक्रो कैचमेंट टेक्निक्स। These are the techniques that directly supply runoff water from a small catchment to the crop and thus water accumulates around the plants, infiltrates into the soil and is stored in the crop root zone. These are called micro-catchment techniques because the runoff-fielding catchments are usually small and directly adjacent to the targeted crop. Second जो है macro-catchment techniques. These techniques concentrate rainwater runoff flowing in an ephemeral body in bracket natural channel and store it in a prepared storage facility for subsequent beneficial use. This category also includes macro catchment techniques in which water is diverted out of the body course to inundate nearby lands. Modern methods of water harvesting. तो इसमें जो फर्स्ट है चेक डैम्स। चेक डैम्स
are small barriers built across the direction of the water flow on shallow rivers and streams for the purpose of water harvesting. The small dams retain excess water flow during monsoon rain in a small catchment area behind the structure. Major environmental benefit is the replenishment of nearby groundwater reserves and wells. The water entrapped by the dam surface and subsurface is primarily intended for use in irrigation during the monsoon and later during the dry season, but can also be used for livestock and domestic use. The main objective of the check dams projects were to recharge groundwater reserves and increase the availability of water for agricultural purpose. ये जो फिगर है चेक डैम का है, इसी तरीके से चेक डैम बनाया जाता है रिवर्स के किनारे, मतलब रिवर्स पे बनाया जाता है। सेकंड जो है फार्म पॉन्ड्स। सेकंड फार्म पॉन्ड्स। फार्म ponds is a dug out structure with definite shape and size, having proper inlet and outlet structures for collecting the surface runoff flowing from the farm area. It is one of the most important rainwater harvesting structure constructed at the lowest portion of the farm area. The stored water must be used for irrigation only. There are three types of excavated farm ponds: square, rectangular, and circular. Circular ponds have high water capacity. The problem associated with farm ponds in red soil is high seepage losses. Some of the traditional methods for seepage control and the use of bentonite soil dispersants and soil cement mixture. ये जो डायग्राम है या फिगर है ये फार्म पॉन्ड्स का है। निचली सतह पे बनाया जाता है फार्म के। थर्ड जो है कंटूर स्टोन वॉल। इट इज कंस्ट्रक्टेड विथ स्टोन्स अक्रॉस द हिल स्लोप्स, thereby intercepting the surface runoff. These terraces help in retarding the soil loss and conserving soil moisture. Spacing of such stone walls is neat rigid. Spacing ranging from 10 meter to 30 meter can be adopted depending upon slope of the terrain. ये कंटूर स्टोन वॉल इस तरीके से स्लॉपी एरिया में बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर।